Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, if you have any question in the previous lectures, you can ask your questions, and then we can complete the remaining part of this lecture. वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन, यस सर। सर ये डिजाइन जो स्टेप्स है इसमें जो आप कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अनस सर। मोहम्मद अनस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर जो डिजाइन स्टेप में जो नंबर ऑफ बार्स की सिलेक्शन है सर, और तो टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन रिबार आता है ना सर, तो जो रिबार के नंबर जो सिलेक्शन है वो हम किस तरह करेंगे सर? हाँ, वो इस तरह करेंगे कि देखें, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल डायमीटर बार, तो यू विल गेट अ लार्ज नंबर ऑफ बार्स। ओके, ठीक है ना? यस सर। The placement of these bars in one layer will be a problem because, as we have discussed this in the previous lecture, that you cannot place a specific number of bars, more than a specific number of bars in one layer, because some space between the bars shall be provided for concrete to flow around the bars, and then there is a cover of 1.5 inch, 1.5 inch on both sides, and then there is a stirrup. So if the number of bars are more, they probably would not be placed in one layer, so you will need another layer of bars to be placed. Okay, and if they cannot be placed in 2 layers, then 3 layers. So generally it is a good practice to have bars to select a bar diameter such that the bars can be placed in one layer or at most in 2 layers, not more than that, because then it will decrease the effective depth. With the more number of layers, then the effective depth will shift upward, and the capacity of the beam that is being calculated will be different from the actual beam, because the effective depth will decrease. So, and if we select a large diameter bar, then there are some other problems associated with it, and those are that the crack width when the beam cracks due to loading in the initial stage will be wider than if we use the small diameter bar. These things you will learn slowly and gradually, but at this stage we should select a bar such that the bar is not of very small diameter and at the same time not of a very large diameter if it is not required. So generally in the beams we use number 5, number 6, and sometimes number 7 and number 8 bars. We don't use generally number 4 bars. If the beams are very short, like in some cases the veranda beams which are only 8 feet long, then in that case we can use number 4 bar, but I would not recommend you to use number 4 bars. Number 5, number 6, number 7, number 8 bars are good to be used in beams. Okay. Any other questions? Assalam. Any other questions? जी, कौन? वसीम खान सर। जी वसीम खान, आप क्वेश्चन करें, ज़रा जोर से बोलें। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जो हम स्टेज 2 में डिजाइन करते थे सर, तो उसमें हमारे साथ जो एरिया ऑफ स्टील है सर, तो वो सर डबल नहीं सर, मतलब कि 250% सर हमारे साथ ज्यादा आता है एरिया सर थर्ड साइड से सर, क्योंकि मैंने एग्जांपल की सर उसमें। आपने अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। वो एग्जांपल हमारे साथ भी शेयर करें ताकि और लोग भी और स्टूडेंट्स भी उससे सीख लें। आपने अच्छा किया, बताएं आप क्वेश्चन आप पूरा करें। यस सर मैंने एक एग्जांपल कर लिया सर के एरिया ऑफ स्टील सर जो हम थर्ड स्टेज से मैंने एग्जांपल किया, वो एरिया ऑफ स्टील हमारे साथ 0.39 आ गया सर। अच्छा। और वही एग्जांपल स्टेज 2 से किया तो उसमें मेरे साथ 0.91 एरिया आ गया सर इन स्क्वायर सर। बिल्कुल ठीक है सर। तो इसमें हमारे साथ सर फेलोवर डक्टाइल आएगा स्टेज 2 डिजाइन से सर। स्टेज 2 डिजाइन में डक्टिलिटी इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। यस, उसमें डक्टिलिटी का ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, बिकॉज दैट वाज द अर्लियर मेथड व्हिच वाज कॉल्ड एज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इट इज स्टिल यूज्ड इन सम केसेस। वर्किंग स्ट्रेस मेथड वो मेथड है कि जिसमें आप
स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड के साथ अगर आप उसको कंपेयर करें तो इन द स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड वी एम्पलीफाई द डिमांड, द लोड्स, and we reduce the capacities, but there is very nominal reduction in the capacities as compared to the reduction in the strength of material that we do in stage 2. Stage 2 में तो हमने FY को हाफ लिया था, FS को हाफ ऑफ FY लिया था, और कंक्रीट की स्ट्रेंथ को तकरीबन 0.45 से हम तो तकरीबन हमने स्ट्रेंथ हाफ कर दिए थे, और हाफ स्ट्रेंथ की वजह से हमारा जो आपका स्टील डबल आता है ना, उस वजह से आता है कि हम द स्टील फुल यील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट यूटिलाइज्ड इन स्टेज 2, ठीक है जी। और स्टेज 3 में हम उसकी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हैं, तो इन दोनों में इसलिए फर्क है। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड पहले 1970s में वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर ये कैलकुलेशन सारी होती थी, और इट वाज अ ब्रिटिश मेथड, ब्रिटिश कोड मेथड था, और इंजीनियर भी ब्रिटिश था जिसने वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे काम किया था। दिस strength design method is a relatively new method. It is more logical than the working stress method, ठीक है ना। तो इस वजह से वर्किंग स्ट्रेस मेथड जरा कॉस्टली मेथड भी है कि उसमें आपका स्टील देखिए आपका डबल स्टील आ गया फॉर द सेम ऑलमोस्ट लोड्स, तो इस वजह से हम स्टेज 3 पे डिजाइन करेंगे। और स्टेज 2 में, स्टेज 2 सिर्फ उन केसेस के लिए, अच्छा स्टेज 2, हाउ इज स्टेज 2 बेटर देन स्टेज 3? स्टेज 2 का सिर्फ एक फायदा है कि स्टेज 2 में आपके क्रैक्स जो हैं ये बिल्कुल नहीं आते, और आते भी हैं तो उतने नैरो होते हैं इवन एट अल्टीमेट लोड कि आपको पता नहीं चलता है। लेकिन आप अगर स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 में क्रैक आपके आएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे, वाइड भी होंगे, और उसमें आप बीम की डिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं। स्टेज 2 में अगर आपको क्रैक्स नहीं चाहिए किसी भी जगह पर, जिस तरह के हम बाज वाटर टैंक्स वगैरह, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स या कंक्रीट डैम जब डिजाइन करते हैं तो वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे डिजाइन करते हैं, वो अल्टीमेट पे डिजाइन नहीं करते, बिकॉज उस केस में सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी इशू नहीं है, उस केस में क्रैक इशू है हमारा। तो हम उस क्रैक की विड्थ को कम करने के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे डिजाइन करते हैं। थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन जो पानी की सीपेज है वो चूंकि उससे रुक जाता है, तो इसलिए हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड वाटर टैंक्स वगैरह में अभी भी हम करते हैं। और स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड जो है उसका डिसएडवांटेज तो ये है कि आपको क्रैक नजर आते जाएंगे, लेकिन उसका फिर एडवांटेज ये है कि द फाइनल फेजर विल बी डक्टाइल एंड इट इज मच चीपर एंड इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू दी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड जो है अल्टीमेट लोड पे जाएगा तो ये क्रैक नजर आएंगे तो फिर क्या होगा। हम जब डिजाइन करते हैं तो हम जो सर्विस लोड हम सिलेक्ट करते हैं ना, जो सर्विस लोड भी हमेशा सिलेक्ट करते हैं कि वो पहले हायर साइड पे होते हैं, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ए बीम इफ इट इज प्रॉपर्ली डिजाइन यूजिंग स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड, इट इज 1 in 10,000। यानी 10,000 में से जब 10,000 डिजाइन आप करेंगे तो एक का चांस है फेलियर का, ठीक है ना। और वो भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, ये नहीं कि खामखा 10,000 में से एक फेल होगा। स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड का जो अप्रोच है फेलियर का, इट इज बेस्ड ऑन फेलियर ऑफ 1 in 10,000, ठीक है ना। तो उसमें भी फेलियर इस तरह का नहीं है, और हम सारे डिजाइन स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड पे करते हैं। इट इज इकोनॉमिकल और ठीक ठाक है, कोई मसला हमारे डिजाइन में नहीं आता है, ठीक है। But I appreciate that you compare these two. If you can share this example with other students, they will benefit from this comparison. मैं भी सोच रहा था कि इस किस्म की कोई कंपैरिजन आपके साथ कोई एग्जांपल में कर लूं, लेकिन ये अच्छा है कि आपने खुद कर लिया। Any other question? Okay, if there are no other questions, then we were last time discussing the placement of reinforcing bars in 2 layers if it is required, that the total number of bars required is such that the bars cannot be placed in 1 layer, then we need to place them in another layer, as shown in this figure. If the bars are to be placed in a second layer, then the clear spacing between the bars placed in the second layer shall be 1.5 inch, as you can see in this figure, that this is the clear from top of the bar in the first layer to the bottom of the bar in the second layer, the spacing shall be at least 1.5 inch. Again, the spacing limit, the spacing restriction is for the flow of concrete around the bars, okay? And then there is another recommendation of the ACA code that if the bars are to be placed in a second layer, then bar in the second layer
every bar in the second layer shall be placed directly above those in the bottom layer. These bars shall be directly above those placed in the bottom layer, which means that no bar can be placed in the second layer, which comes between the two bars in the bottom layer. For example, if we have to place 3 bars in the second layer, then the 2 bars at the ends will be placed directly above those in the bottom layer, above this layer. But the third bar cannot be placed because the third bar has to be placed between these 2 bars for symmetrical placement. For symmetrical placement, this one bar should be placed between these 2 bars, which is not allowed as per code, because this will also prevent the flow of concrete to the other bars. So the code does not allow you to do this. Okay, the bar in the second layer must be placed directly above those in the bottom layer. So for example, if there is a situation where 7 bars are to be required from calculations, we will provide 8 bars to satisfy this requirement of the code, because 3 bars in the second layer are not allowed. The placement of 3 bars in the second layer is not allowed as per the code requirement. Therefore, we will add 1 more bar to it and we'll place 4 plus 4 bars, okay, to satisfy the code criteria. You should be careful about satisfying all the code recommendations, not only the recommendations made in the calculation, but all other recommendations. These recommendations of the code are called as the recommendation on the placement of bars. So the recommendation on placement of bars must have to be satisfied. Okay, there is another code recommendation, and this recommendation is with regard to the symmetrical placement of reinforcing bars, that the bars must be placed symmetrically about the centroid of the beam. If this is centroid of the beam, then this area of steel on one side of the centroid must be equal to this area, the area of steel on the other side. This is called symmetrical placement of reinforcing bar. Symmetrical placement of reinforcing bar is a must requirement of the ACI code. Then there is another requirement of the code that if bars are to be placed in one layer, you can place bars with different diameter. For example, let's say this bar is number 8. This bar can be of any other diameter, but this diameter difference cannot be larger than 2 sizes, which means that if this bar is number 8, this can be number 6, but this cannot be number 5, because then the difference will be more than 2 sizes. This is number 8. Number 8 is 1 inch. Number 6 is 3 by 4 inch. 3 by 4 inch. And then we have 7 by 8 inch bar. So 6 by 8, then 7 by 8, and up to 8. There are difference of 2 sizes. But if we use this bar, if we use 5 by 8 bar, then the difference will be more than 2 sizes. But this is a requirement for one layer. I will say again, if the bars are to be placed in one layer, and you want to place different diameter of bar in one layer, you can do so. But then the bar difference shall not be more than 2 sizes. But in another layer, for example, in the layer above this bottom layer, in another layer you can do this. Even if the bar difference is larger than 2 sizes from a bar from the bar in the bottom layer, so it is allowed. It is allowed to have difference between the layers more than 2 sizes, but within the layer, the difference more than 2 sizes is not allowed. Okay. Okay, next is the design phase. We will finally, when the reinforcement is placed inside the beam and the design is completed, we will check the capacity, because in the beginning we assumed 2 things in the beginning. One, we assume the effective depth of the beam, because the effective depth of the beam, the exact effective depth of the beam is not known to us. You know that the effective depth is the distance from top of the beam to the centroid of the reinforcement. And the centroid of the reinforcement is not exactly known to us, because we do not know the area of steel in the beginning. Once the area of steel is calculated, then the number of bars are calculated, and then those bars are placed inside the beam. Then we exactly know the effective depth D. So it is possible that the effective depth D assumed in the beginning is larger than that of the final effective depth.
So if the final effective depth calculated after the placement of reinforcement is less than what has been assumed in the beginning, so it is possible that phi mn, actual phi mn, after the placement of reinforcing bar is less than what was assumed in the beginning. So this check must have to be done in this manner. You will see this. The phi mn is equal to phi as f by d minus a by 2. This as will now be the actual as that we have calculated. Effective depth can be calculated now from the actual area of steel. Small a can now also be calculated from the actual as, and then this phi mn will be calculated, and phi mn must be greater than or equal to mu at this final stage. We will do this like this. For example, this is a beam whose width is b and effective depth is d in the beginning, and that effective depth in the beginning is, let's say, 15.5 inch. 15.5 inch. If the total depth is 18 inch for this beam, total depth is 18 inch, and the effective depth in the beginning we assume 15.5 inch, which means that the distance from the bottom to the centroid, which is denoted by y bar is 2.5 inch in this case. I will try to explain this a little bit more to you. You know that when we start our calculation, we do not know the number of bars. We just say the area of steel here, and we say that this is the effective depth. Okay, this is the effective depth, and this distance from the bottom of the beam to the centroid of this is called as y bar, and total h is equal to d plus y bar. Correct? So in the beginning, we do not know the diameter of the bar. We do not know the total area of steel. We just assume some effective depth d, and usually we say that let's say y bar is 2.5 inch. Y bar can be assumed from 2.5, let's say 2.25, from 2.25 to 3 inch in the beginning. Y bar can be assumed from 2.25 to 3 inch in the beginning. So for example, if you assume y bar 2.5 inch, then the effective depth which is needed in your calculation will be 15.5 inch for 18 inch deep beam. If this depth is 18 inch, this is 18 inch, and we say that y bar is in the beginning, let's say y bar is 2.5 inch, then d will be 18 minus 2.5, which is 15.5 inch. Okay, so this is what we assume in the beginning. We finish our calculations, we find area of steel, and then the area of steel is placed in this manner as shown in this figure. Look at this figure. These are 5 number 6 bars. You know the area of steel of number 6 bar is 0.44 square inch. Now for these 5 number 6 bars, we can exactly calculate y bar by taking moment about the bottom of the beam. For these 5 bars, and then this 5 multiplied by 0.44, which is the area of steel of 1 bar, into the moment arm of this is y bar from the centroid of this 5 bar, which is not known to us in the beginning. This is like this, 5 into 0.44 into y bar. The moment is taken about the bottom of the bar. And then for these 3 bars, 3 into 0.44 into y1. Y1 is the distance from the centroid of these bars to the bottom, which is known to us because the cover is 1.5 inch, and then you have one stirrup, which is 3 by 8 inch usually. So y1 is 1.5 inch plus 3 by 8 and plus 6 by 8, half of 6 by 8, because the centroid of this will be half. So this is 2.25 inch. Similarly, we can also calculate y2. Y2 can be calculated in this manner. 1.5 is the cover. Then you have 3 by 8 inch stirrup. Then 6 by 8 inch is the full diameter of this bar placed in one layer, and then a spacing of 1.5 inch between the two. And then the half of the centroid is half of 6 by 8. So this is 4.5 inch. So knowing y1 and y2, we can calculate y bar now from this equation. Y bar comes out to be 3.15 inch now. So this is the actual y bar. Now d can be calculated. H minus y bar is 14.85 inch. So this d is different from what we assumed in the beginning. So this may give you phi mn less than what is required. Phi mn must be greater than mu. Okay. So this is the final check that we have to make.
and this will end our design problem. After this, you will need drafting. The drafting is done, and the design is completed. Now we will start designing one beam. This will be your first beam design. This is the design of beam for flexure, not for shear, okay? We'll be only designing the beam against the flexure stresses. So you better write down the data from this slide, and then we will start discussing this. Okay, so in this picture, you can see a beam has been shown. The length of the beam from center of the support to center of the other support is 20 feet. And you can also see some sandbags on the beam. These bags have been shown just to tell you that uniformly distributed load would look like this. Uniformly distributed load. This is not a point load. Okay, this is one thing. The second thing is that we have to design this beam according to the ACI 318-19 code, which is what we are discussing in our discussions. And then the dead load on the beam is 0.5 kip per foot, excluding self-weight of the beam, because self-weight of the beam will also produce bending moments that must have to be taken into account. But in addition to the self-weight of the beam, there is a dead load 0.5 kip per foot. In our actual situations, this dead load will come from the flooring, marbles, and other fixtures which are permanently fixed on the structure. Okay, these are called dead loads. So there are two types of dead loads. One is the self-weight of the structure, because the self-weight of the structure will also produce bending moments. And especially in the case of reinforced concrete beams, the sections are very thick and very heavy, and they produce substantial part of the total moment from the self-weight. And then in addition to the self-weight, which is the self-weight is also dead load, but then there is the other type of dead load which is over and above the self-weight. That is called superimposed dead load, SDL. So one is self-weight of the structure, and the other is superimposed dead load over and above the self-weight. These two will form the total dead load, and they will stay permanently throughout the life of the structure, most part of the life of the structure. Okay, so they shall be treated as dead load, because the dead load has to be multiplied by a factor of 1.2.
and live load has to be multiplied by a factor of 1.6. So we need to differentiate between these two types of loads. Okay, so dead load, just as an example, is been given to us directly. This is superimposed dead load. This is SDL, not the self weight, because it is clearly mentioned that it does not include the self weight of the beam. So the self weight of the beam has to be added to this in order to get the total dead load. The live load is also directly given to us in this problem. So let's start this. Okay, the concrete strength FC prime 3 KSI, and the yield strength of steel is 40 KSI. So let's start this. You will follow the steps that we discussed in the previous lecture. Step number one, sizes. How to fix the size of the beam? Because if you remember, in the very beginning, I said this very clearly, that the design of a member is determining the size of the member and the quantity of reinforcement in that member. This is called design. Determining the size of the member and determining the quantity of reinforcement to be placed inside the member. But since this is not possible to do simultaneously, so what we will do, it is a general practice in design that we assume the size of the member and calculate the reinforcement instead of determining both of them. Because if we want to determine both of them, then it will be numerically difficult for us. And also, there are some practical aspects to this. What are the practical aspects? The practical aspects is that the members which are to be prepared at the site must be prepared by providing some formwork to the members. Okay, you know that concrete is poured in the formwork. We have seen in one of the video that we provided formwork to the columns and formwork to the beams, and then we placed reinforcement, and after the reinforcement is placed and fixed, then concrete is poured inside the formwork. Concrete is poured inside the formwork at the site. So the concrete, the member shape will come from the formwork. Whatever the shape of the formwork is, the final shape of the member will be like that. So for this purpose, the formwork becomes a constraint for us in a practical situation. What do you mean by a constraint? Constraint means that there will not be always every type of formwork available in the market from every type of every size. For example, you decide that it is very good from the calculation point of view to use a beam with the 13-inch width and let's say 17.5-inch total depth. So your calculation tells you that these are very optimized sizes, width of 13-inch and depth of 17.5-inch. But then this beam must have to be produced practically in the field situation. And to produce this beam, you have to have the formwork. If you do not have the formwork, you will not be able to produce the beam. And the formwork of every size will not always be available in the market. Okay, there are some specific sizes which are available in the market, and to prepare a formwork for your project will become too much uneconomical. So we have to look at the project from a holistic approach, which means that every step in the project must have to be considered before finalizing our design. And the selection of the size of the beam, which is directly related to the selection of the formwork, is one of the main steps in the selection of sizes of the beam or any other member. Okay, so when we finally select the size of a member, then at the back of our mind, we must have the information of the sizes which are readily available in the market. If these sizes are not readily available in the market, then a special formwork has to be prepared, and then it will make our project uneconomical as a whole. Okay, so these things are to be kept in mind. So sizes of the beam which we are selecting right now will be partly coming from the ACI code recommendation,
but will also partly come from the availability of the sizes. So I will share with you what sizes are actually available in the market these days and what are the problems if you select sizes different than those available in the market. Okay, so first of all, as you know that we will require width of the beam and also the depth of the beam. For the depth of the beam, if you remember in the last lecture, we said that to select the depth of the beam, these are the ACI code recommendations. Mind that these recommendations are only to give you a head start, and you cannot assume a depth less than that calculated from these equations. But you can select a depth more than these minimum depth required as per ACI code. Okay, these are 4 situations. In every situation, the equation for calculating minimum depth is different. This is our case. By our case, I mean that the case is in the example, which is a simply supported beam. If there is a simply supported beam, then the depth of this beam, the depth of the beam can be estimated from this equation, L by 16. But this will be the minimum depth required. And these equations have been derived based on the criteria of minimizing the deflection in the beam. The code wants to make sure that certain minimum depths are assumed for the depth for the beam, so that the beam does not excessively deflect under the load. Okay. So in the L by 16 is the equation that we will use in our example to estimate the depth in the beginning. When we use L by 16, so L by 16 gives us L, because L is 20 feet, 20 by 16, and multiply by 15 inch. So 15 inch is the minimum depth required as per ACI total depth. 15 inch is the total depth required. Also, if you look at the table, you'll find a note at the end of the table that this table is applicable when your grade of steel is 60 KSI. But if your grade of steel is different than 60 KSI, then all these equations will be multiplied by the expression mentioned in these brackets. That is 0.4 plus Fy divided by 100,000. So for 40 KSI, this will be 40,000 divided by 100,000. This will give 0.4 plus 0.4. This will become 0.8. So this 0.8 shall be multiplied with these L by 16 in the case of grade 40. Since in the example that we are studying right now, the grade steel is 40, so we will multiply this depth 15 by 0.4 plus 40,000 divided this, which will further reduce the minimum depth requirement equal 12 inch. Now, I say again that you can select any depth, but more than this one. This is the minimum requirement of the code. This depth is the minimum requirement. You can select a depth more than this. But if you want to select a depth more than this, then you should look into the market availability. The available sizes in the market for beams are 18 inch deep, very readily available. 18 inch deep beam is very readily available. 12 inch deep is also very readily available. But instead of 12 inch, we have selected 18 inch because it is always good. It is always good to have depth slightly more than what is required by the ACI code. It is always good for certain reason, which you will learn slowly and gradually. The depth, you know that the equation of phi mn is a function of area of steel and effective depth of the beam. Phi mn is equal to phi as Fy d minus a by 2. So if you increase depth, area of steel will reduce. By increasing depth, the area of steel will reduce. And you know that concrete is cheaper than the steel. So it will be good to have more concrete instead of more area of steel. But there must be some optimized solution to this. This is not an open-ended statement that keep on increasing the depth and keep on decreasing the area of steel. This will not always work. Within certain range, reducing area of steel and increasing depth will be good. Okay? So we select, based on this discussion, we select a depth of 18 inch because 18 inch deep, I know that they are readily available, the formwork will be readily available. Okay, there is no criteria of the code on the width of the beam. There is only one criteria, that the minimum width in the minimum width of the beam
in many situations, many situations, shall be taken as 12 inch. So 12 inch you should take as a minimum width of the beam, and over and above this you can take 15 inch, 18 inch, again depending on the availability of the formwork in the market. There is another advantage of taking more width, and that is that when you have more space for placement of fewer bars, it means wide beams will be better than the narrow beams, because if you select a beam width of less than 12 inch, then it will be very difficult for you to place the reinforcement inside the beam, because 1.5 inch on one side, 1.5 inch on the other side, then strip diameter. So you will be left with very small space for placement of reinforcement. And when reinforcement is placed in that small space, then the concrete flow will be disturbed, and concrete will not be flowing easily around each and every bar. So the bond between steel and concrete will be weak. And if you remember last time I told you that we have to make sure the steel perfectly bonds with concrete, because it's one of the main requirements. If steel does not make a perfect bond with concrete, then the flexure capacity will not be what has been calculated from our calculations. Okay. And the final selection of beam size depends on several factors, specifically the availability of formwork, as I tried to explain to you. Okay, so once the size of the beam is fixed, 12 inch and 18 inch, we will then also assume the effective depth. Initially, let's say we assume y bar is equal to 2.5 inch, so effective depth comes out to 15.5 inch. Okay, there is another also statement in this slide that B, which is the width of the beam, is generally expressed by B with subscript W, which means the web width. This is a general practice in RCD. Width of the beam is usually denoted by BW, width of BW, web width. So instead of B, we will keep on writing BW for width of the beam in our next slides. After the size is selected, that's our second step, is the calculation of loads. Okay. First of all, we will calculate dead loads, and the dead load, superimposed dead load, is being directly given to us, which is 0.5 kip per foot, but self weight of the beam needs to be calculated. And self weight of the beam will be calculated in this manner, because it is a uniformly distributed load. The self weight of the beam will calculate weight of 1 foot of the beam, and this 1 foot is then uniformly distributed 1 foot on each 1 foot, 1 foot, 1 foot, 1 foot. So if we calculate load of this 1 foot, we can, so the width of this beam is, let's say, in this case it is 12 inch, the total depth is 18 inch. So, and the width is, let's say, 1 foot. So we can calculate it like this: 12 inch into 18 inch and divide by 144. So this will convert this into feet into 1 foot, which we generally do not write. Okay, so whether you write this or do not write this, it doesn't make a difference in calculation. And then multiply this by density of concrete. You know the density of reinforced concrete is 0.15 kip per cubic foot. Kip per cubic foot. This is one 12 inch by 18 inch by 1 foot. So this is 1.5 cubic foot, 1 foot, 1.5, and then 1 foot. So this cubic foot of concrete will multiply by 0.15 to give you the weight in kip per running foot. So this is what we have done. This is 12 inch, 18 inch, divided by 144, density of concrete. So the weight of this beam is 0.225 kip per foot, which means that the weight is 225 pound per foot. The weight of every piece of this beam, 1 foot long, 12 inch wide, and 18 inch deep, is 223 pound per 225 pound. Okay, what is the weight of a normal person, average weight of a person? 65, sir. 65 kg. In pounds? In pounds?
Sir, 200 sir, pounds, sir. 200? No, no, not 200. Around about 130 pounds. 130. Let's say 150. Slightly heavier person. So if the weight of one person is 150 pound, then you can realize what a 225 pound weight means. 1 foot of the beam. The beam is 12-inch wide and 18-inch deep. Okay? So this beam has a weight of 225 pound per foot, almost 1.5 persons per running foot of the beam. So it is the point that I want to make is that the weight is substantial. If you can compare this weight with a person with a normal person weight, so this is a substantial weight. Okay, and then we will amplify the loads as per the ACI code criteria of the strength design method. We have dead load of 0.5 kg per foot, which is given to us in the statement of the problem. 0.225 is weight, self weight, and then we will add these two. We will add up these two values and multiply with 1.2. We have also 0.5 kg per foot live load, which is multiplied with 1.6, and then you will get WU, which is ultimate load, and that is 1.67 kg per foot. So now you can also compare this 1.67 kg per foot. If the weight of one person is 150 pound per foot, 150 pound, 150 pound. If the weight of one normal person is 150 pound, then tell me how many 1.67 kg load is equal to how many persons? Sir, 11%. 11 persons. 11 persons in standing in 1 foot area, which is not possible, but they will be standing one above the other. And then it will give you a weight of this. So the point is that you should realize the weights. What are these weights equal to? Whether these weights are heavier or they are lighter. So this is a heavy weight. You can see 1.67 kg per foot. The beam is to carry the weight of 11 persons. You said 11 persons or 13 persons. 13 persons. Every foot of the beam is basically resisting or carrying the weight of 13 people whose average weight is 150 pounds. So this is a very huge load. I hope now you can understand this. Yes, sir. Yes, sir. The next step is the analysis. This is a simply supported beam, and you can do the analysis very easily. It's not difficult. The shear force diagram. I know you are very good in drawing shear force and bending moment diagrams. That can be drawn very easily in this case because it is simply supported beam. 1.67 multiplied by half of the distance, which is 10 feet, will give you one reaction, which will be 16.7. The other reaction is also 16.7. You can draw shear force diagram, although you will not be using shear force diagram in this example because this example is specifically for the flexible design of the beam. And the bending moment diagram can be calculated from the half of the area of this triangle or from WL square by 8, which comes out to be 1002 inch cape. And that is only at the center of the beam. Okay? Away from the center of the beam toward the support, the bending moment drastically decreases. But according to the ACI code, we will be designing for the maximum bending moment. So our maximum bending moment is 1002 inch cape. Okay? This is the demand or applied bending moment, which has to be resisted by the beam. This is MU, ultimate bending moment, ultimate demand, or ultimate applied moment. And you should also at this time look at the applied moment. That applied moment comes from where? Applied moment comes from the load and from the length of the beam, regardless of the material of the beam. If this is a steel beam, if this is a plastic beam, if this is a beam made of some other material, still this applied moment will remain the same. This will not change because the moment comes from the load on the beam and the length of the beam, irrespective of the material of the beam. Okay? So the applied moment comes from the load and from the length of the beam.
Okay. And the resisting moment will then depend on the material. Resisting moment. Resisting moment. The moment should resist this mu. The resisting moment will come from phi mn. Phi mn. Okay, now there's one more thing that you should learn and remember, that according to the ACI code, Mn, nominal moment, is equal to As Fy d minus A by 2. Okay, this is called nominal moment, and nominal moment is the moment which is calculated based on the specified strength Fy, let's say 40 or 60, and the specified dimension of the beam, specified dimensions. But then the ACI code says that the beam section and area of steel shall be calculated based on phi mn, which is the design flexure capacity. This is nominal capacity, and this is design capacity. So the design capacity comes from phi mn, and phi is a factor less than 1, and this is taken as 0.9 for flexure in this case. So there is a 10% reduction in the flexure capacity, okay, according to the ACI code. So our design capacity is equal to phi mn, and this phi mn or md shall be greater than the applied moment, which is mu, or at least equal to this. Then the beam will be able to resist the load which is coming on the beam. Excuse me. No. Okay. So our objective is that phi mn shall be at least equal to mu, so as to carry the load that is coming on the beam. Okay, the beam will produce bending moment mu, and this mu shall be successfully carried by the beam or resisted by the beam. So the beam will be successful in resisting the bending moments or carrying the load when phi mn is equal to mu. Okay, and we will calculate area of steel. We will assume size of the beam, and we will also select the area of steel, the number of bars to be placed inside the beam, and also look at the placement of the bars. So how can we do this? For phi mn is equal to mu, then this phi mn can be written like this, and then from this As can be calculated. As is equal to mu divided by phi Fy d minus A by 2. We can assume initially small a, okay, and then calculate As, and then we can calculate small a and recalculate As, and so on, like this. In the beginning, this will give you a good head start, although you can assume any value of small a, obviously smaller than half of the depth of the beam, but the 0.2 times d will give you a very good head start. 0.2 times d. You know that the effective depth of the beam is 15.5 inch. That we have assumed in the beginning. So 0.2 times this will give you small a equal to 3.1 inch. And then As is calculated 1002 divided by 0.940 d minus A by 2, where A is 3.1. So area of steel comes out to be 1.995. Substitute this value of As in this equation for A, calculation of A. This will give us, because everything else is known, As comes from this equation, Fy is known, Fc is known, Bw width of the beam is known. So small a can be calculated from this equation, and this comes up with 2.61 inch against the value of 3.1 inch in the beginning. This comes up with 2.61 inch. So we will recalculate As from this small a now. This small a will be substituted in this equation. Everything else remains the same. So only small a will change. So this will give us A in the next trial equal to 1.96 square inch. We will recalculate small a from this As,
recalculate A, the small a comes out to be 2.56 inches. Excuse me, sir. Sir, your screen is not visible.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So before the computer shut down, we were on this slide 57. Yes, sir. Okay. After few trials, you will see that area of steel no longer changes, which means that the values between the previous and the new value, the difference is very, very small. So you can select that value of area of steel, which in this case comes out to be 1.95 square inch. Because the difference from this value to this value is almost zero, so we can pick up this value. We will be using only 2 digits after the decimal in our calculations of designs, okay? So this is a 1.95 square inch. Okay, now the next step will be to check this area of steel against the minimum requirement of the code and maximum requirement of the code. Minimum, you know that these are 2 equations, 3FC prime divided by Fy BWD and 200 divided by Fy BWD. And if last time you remember, I told you that this 3 square root of FC prime, this is the difference so between the 2 equations. Fy BWD, one and the same in 2 equations. You should use the greater value. So 3FC prime will give you a value less than 200 as long as your FC prime is less than 4500 psi. So for all values of FC prime less than 4500 psi, you can straight away use this equation, 200 divided by Fy BWD. Okay, when the FC prime value is more than 4500 psi, only then this equation will give you a value greater than 200 divided by Fy BWD. And in most of the cases in reinforced concrete, we use FC prime equal to 3000 or 4000 for beams, not more than this. Although in columns we can go up to 10,000 psi, but in beams we do not usually use high strength concrete because it is not required. So this equation 200 divided by Fy BWD will give you a greater value, which is there. You can see 0.93 square inch is greater than this. We will use 0.93 square inch. Our calculated value is greater than this value. Okay. Now coming to the AS max. AS max is 0.3 into FC prime divided by Fy BWD. So this gives us a value of 4.2 square inch. The calculated value of AS is now less than AS max, which is what is required in the code and shall be greater than minimum. Now I have a question from all of you, that if AS calculated comes out to be less than AS minimum, what should we do? Don't use because premature failure will occur. What is your name and please speak loudly. So my name is Hussein sir. हम use नहीं करेंगे फिर सर अगर AS minimum आ गया सर. अगर AS minimum से कम आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? सर मिनिमम से ज्यादा लेंगे सर, वही नहीं यूज नहीं करेंगे. मिनिमम से ज्यादा किस तरह लेंगे? You should pay attention and listen to me. If AS comes out to be less than AS minimum, we will use AS minimum. Okay? If AS value, let's say in this particular case, is 0.9, 0.8, or any value less than AS minimum, we will use AS minimum because the code will not allow us to use a value of AS less than AS minimum. Okay, clear? Yes, sir. इसका मतलब ये होगा कि देखें एरिया ऑफ स्टील तो आप मालूम करते हैं एमयू से मालूम करते हैं ना. व्हाट इज एमयू? एमयू आपका डिमांड है जो कि लोड और लेंथ से आता है. बाज़ वक्त आपका एमयू इतना कम होता है कि आप जो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं वो एरिया ऑफ स्टील बहुत ही कम वैल्यू हमारे पास आ जाती है. वो एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू अगर बहुत कम आ जाए तो फिर आप एस मिनिमम से उसको कंपेयर करेंगे और आप उस सूरत में एस मिनिमम इस्तेमाल करेंगे और वो एस जो एस मिनिमम से कम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे. उसका एक रीज़न है. उसका रीज़न ये है कि एस मिनिमम की जो ये वैल्यू है ना, ये मालूम होती है
किस चीज़ पर? अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने आपको एक डेरिवेशन भी शेयर आपके साथ की थी कि अगर आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ ले लें एफ सी प्राइम सॉरी एफ आर विच इज द मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर इक्वल टू 7.5 स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी प्राइम, तो ए एस जब आप ए एस मिनिमम से कम डालेंगे तो फिर उस ए एस मिनिमम का फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ वो एस मिनिमम से ज्यादा है। अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ ए एस मिनिमम से ज्यादा हो टेंशन में तो फिर ए एस डालने का क्या फायदा है? हम तो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, टेंसाइल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एस डालते हैं, लेकिन अगर एस बहुत कम हो और टेंसाइल कैपेसिटी जो कि हमें कंक्रीट दे रहा है उससे भी कम हो तो फिर तो उस एस डालने का फायदा नहीं है, ठीक है ना? तो हमें इतना एस डालना चाहिए कि वो कंक्रीट की टेंसाइल कैपेसिटी से ज्यादा हो, और वो एस मिनिमम हमें देता है, इसीलिए ये एसीआई कोड ने इसको निकाला हुआ है। मैं आपके लिए एक दफा दोबारा इसको कर सकता हूँ, एस मिनिमम का कंसेप्ट क्या है। देखिए, अगर हमारे पास लेट्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेज 1 नाउ, स्टेज 1 में हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कि कंट्रीब्यूशन इज आल्सो कमिंग फ्रॉम if this is ft, okay, and somewhere here it is reinforcement and we want to calculate T from the stress diagram. So T basically this tensile strength which is coming from the bottom part of the concrete beam should come from steel and concrete both, okay. So this will be equal to Ft plus 0 divided by 2 into Bh by 2, because this is stress in concrete, tensile strength of concrete, tensile stress in the bottom fiber is Ft, and average of this is Ft plus 0 divided by 2, and the area is Bh by 2. And this Ft, you know, it is equal to 7.5 square root of Fc prime. This is the tensile force in concrete alone, not with steel. So this will become equal to Bh by 4 into 7.5 Fc prime. Okay? And this value will be finally equal to how much? 7.5 divided by 4. 1.875. So tensile force in concrete will be equal to, tensile resistance of concrete will be equal to 1.875 BH into Fc prime square root of Fc prime. This is from concrete. This, the area of steel that we provide shall be equal to a value so that the tensile capacity or tensile resistance of steel is not at least less than this, ठीक है? क्योंकि अगर स्टील आप इतना डालें कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इससे भी कम हो तो फिर तो डालने का फायदा नहीं है। तो लेट्स से हम कहते हैं कि हमने स्टील इतना डाला है, AS, this ASFY which comes from steel should be greater than or equal to at least this value which is coming from concrete. So this will be equal to 1.875 and Fc prime and BH, and this will be AS minimum. So this AS minimum will be equal to now 1.875 Fc prime BH divided by Fy. So this will be like this. Into BH. Okay. And H, if we express H in terms of D, H will be greater than D. Normally, H will be equal to 1.2 times D. So if we substitute the value of H is equal to 1.2 D in this equation, then what will be the final equation? Sir, 2.25.
and root of C prime into B. अच्छा, and now you compare this with the previous equation. एस मिनिमम की इक्वेशन का कंपेयर करें तो कितना फर्क है? उसमें 3 है और इसमें 2.25 आ गया। समझ रहे हैं आप? यस सर। आप देखें ये एरिया आपसे मिनिमम इस तरह निकला हुआ है कि कम से कम ये जो कंक्रीट की रेजिस्टेंस है ना, टेंसाइल रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, तो स्टील आप इतना डालें कि इससे तो ज्यादा होना, अगर इससे कम हो तो फिर तो फायदा नहीं है। तो 2.25 के जो 3 लिया हुआ है, 3 टाइम्स सी प्राइम, ताकि एस मिनिमम आपका इससे ज्यादा आ जाए, इस वैल्यू से ज्यादा आ जाए, तो फिर वो एस मिनिमम जो है वो फायदा देगा। वरना अगर इससे कम हो तो फिर तो एस का डालने का फायदा नहीं, फिर तो कंक्रीट क्रैक हो जाएगा, बस ऊपर क्रैक प्रोपेगेट करके बीम को फेल कर देगा। तो दिस एस मिनिमम इज बेस्ड ऑन द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें ना, इक्वेशन 3FC प्राइम, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही इक्वेशन हमारे 2.25 आता है, और एसीआई कोड ने इसको थोड़ा आगे जैकअप किया हुआ है 3 तक, so that the value of AS minimum is greater than this. AS max we have derived in the previous lecture that it should be calculated like this, and AS max is necessary to calculate so that AS is not more than AS max, because if AS is more than AS max, then the beam will not fail in a ductile mode. Okay, we have answered the question. If AS is less than AS minimum, then we will provide AS minimum. But if AS is more than AS max, this question is still unanswered. What should we do if AS, because AS, you see, AS will come from the demand, because you are calculating AS from MU. So with the increase in MU, which means with the increase in load or length, MU will keep on increasing and AS will also keep on increasing, provided we do not change the depth of the beam. So if AS calculated is more than AS max, what should we do? AS max use कर लेंगे जी सर, AS max यूज कर लेंगे सर। नहीं, लेकिन जब आपको जरूरत AS की है तो फिर आप AS max किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे 5 बार्स की जरूरत है, ताकि MU को उठाने के लिए 5 सरिये में डालूंगा तो फिर बीम मेरा फेल नहीं होगा, और मैक्सिमम 4 हैं तो मैं 4 डालूंगा तो बीम तो फेल हो जाएगा। जरूरत आपको 5 बार्स की है और आप मैक्सिमम 4 डाल सकते हैं। ठीक है सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो बीम के जो डायमेंशन है सर उसको थोड़ा सा बढ़ा दे, तो फिर हमारे पास जो एरिया, राइट, ये बिल्कुल you can change it. You must have to change the dimension. ठीक है ना, आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप D बढ़ाएंगे ना, आप AS को देखें, AS is MU divided by 5 FY and D minus A by 2. So if you increase depth of the beam, AS will reduce. तो हमारा जो रिक्वायर्ड AS है ना, अगर वो 5 सरिये आते हैं, हम थोड़ा डेप्थ बढ़ा देंगे तो 4 आ जाएंगे, तो 4 इसके बराबर हो जाएंगे। अगर थोड़ा और डेप्थ बढ़ा देंगे तो AS मजीद कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाय इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द बीम वी कैन रिड्यूस AS, और फिर AS को AS मैक्स से कंपेयर करेंगे, तो हम उतना डेप्थ बढ़ाएंगे कि जहां पर AS मैक्स से कम आ जाए। अगर AS मैक्स से ज्यादा आ गया तो वी कैन नॉट यूज दैट AS एज पर द कोड रिक्वायरमेंट्स। समझ गए आप? सर, जब एस मिनिमम के केस में भी अगर हम डेप्थ डिक्रीज कर दें तो एस इंक्रीज हो जाएगा ना, तो हमने क्यों कहा कि हम एस मिनिमम देंगे अगर एस मिनिमम से कम आ जाए? तो ज्यादा तो अच्छा है ना। अगर आपका एस रिक्वायर्ड, अगर आपके 3 बार रिक्वायर्ड हैं और मिनिमम रिइंफोर्समेंट आपकी 4 बार है, तो 4 बार आप डालेंगे तो बीम तो फेल नहीं होगा। लेकिन इसमें तो आप कम कर रहे हैं ना, आपकी जरूरत 5 की और आप कहते 4 डालो, फिर तो बीम फेल होगा ना एस मैक्स के केस में। ठीक है, और सर अगर हम इसकी स्टील की स्ट्रेंथ के साथ मतलब उसको कम ज्यादा करके अपने एस को लाएं तो वो भी तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन वो अवेलेबिलिटी मार्केट में सिर्फ 2 बार है ना, ग्रेड 40 या 60 है। ठीक है सर, ग्रेड 40 60 है, तो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंट है ना हम, तो उसमें कि हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त 60 से 70 के सही अभी बनना शुरू हो गया है, तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ डेप्थ की रह जाती है। और डेप्थ भी मैं आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट देता हूं, लेकिन उसको मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इन सर्टेन सिचुएशन देयर इज आल्सो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंक्रीजिंग द डेप्थ। उसमें हम क्या करेंगे वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे, फिर उसमें उसका भी एक सोल्यूशन है, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये मैं दोबारा स्टेटमेंट आपको देता हूं. If AS comes out to be less than AS minimum, we will always provide AS minimum. Okay, उस AS minimum से कम कभी किसी सूरत में प्रोवाइड नहीं करेंगे. And if AS comes out to be more than AS max, then by changing the dimension of the beam, preferably the depth of the beam, because width से इतना फर्क नहीं आएगा. Depth of the beam we can reduce our AS requirement, so that AS finally comes out to be less than AS max. Okay, I hope this is clear. Yes, sir. Okay, the next is now placement of bars. So in the placement of bar, as I said earlier, that in the placement of bar, there will be some limitations and restrictions from the practical point of view. First of all, the availability of these bars in the market shall be known to a designer who is working in a particular locality, because every bar diameter will not be available in the market readily. I mean, readily availability is important, because if it is ordered in the factory, they will produce it, but then it will be project specific. So readily, the bars which are available in the market is most common is half-inch bar, which is number 4 bar, and then number 6 bar, which is 3 by 4 inch diameter, and also number 8 bar is also available, not like number 4 and number 6, but it is available. And uncommon bars are number 5 and number 7. Although the use of number 5 and number 7 bar has increased in the recent past, but a few years ago these bars were not readily available in the market, and for this purpose we would we preferred using number 6 bars mostly in the beams. Number 6 bars we mostly use in the beams. Sometimes in very short beams we also use number 4 bar. Okay. Now you know the total area of steel required is 1.9 square inch. Okay. So you can try using number 4 bar up to number 8 bars and calculate the number of bars and tell me for every case the number of bars. You can discuss it among yourselves. Yeah, you can do it yourself. It is very easy. Area of steel total is 1.96 square inch. Divide the total area of steel by the area of 1 bar and calculate the number of bars, starting from number 4 up to number 8. Okay, tell me how many bars are required in the case of number 4 bar. $10 bars, sir. Area of steel, number of bars is equal to area of steel, number of bars. Area of steel, which is 1.95, divided by area of 1 bar. Area of bar in case of number 4 is how much? 0.2. Zero point two. 1.9 divided by 0.2. Area of 1 bar is 0.2. So exactly 9.75, but 9.75 bars cannot be used. We must have used 10 bars. Okay? Sir, number 5 के लिए 7 bars. Number 5 के लिए 7 bars. ठीक है? Number 6 के लिए और सिर्फ 4.4 है तो ऑलमोस्ट 5. नंबर 6 के लिए 5 बार्स. बिल्कुल ठीक है, आगे चलते रहें. नंबर 7 के लिए भी करें.
Sir, 4 bars. 4 bars, and then सेट नंबर 8 के लिए ऑलमोस्ट 3 चाहिए, 2.5 आ रहा है. 2.5, 3 bars. Okay. So you can see that with the increase in diameter of the bar, the number of bars decreases. Okay. If we use number 4 bar, we need 10 bars. Okay, we need 10 bars. Now we have to place these 10 bars inside the beam whose width is 12 inch. If you start placing these bars, 10 bars inside the beam whose width is 12 inch, you will see that the bars cannot be placed in one layer for sure, and it will be placed in 2 layers. Okay, if you try this, the width of the beam is 12 inch. Okay, you can do this. I will give you a hint, and then you can try this yourself, because this is important. Placement of bar is very, very important from practical point of view. This is the beam width. Okay, you have a stirrup inside the beam. Then the available space is this much. You should keep in mind. This is the available space. This is the total width of the beam, which is 12 inch. 1.5 inch on one side will be consumed by the cover. Then you have a 3 by 8 inch diameter bar on one side and 3 by 8 inch on the other side. So the available space will be 12 inch minus 1.5 inch cover minus 1.5 inch cover on both sides, one side and other side, and then minus 3 by 8 on one side and minus 3 by 8 on the other side. So the available space for placement of the bars will be how much? The available space is how much? 9.75. No. 8.25. 8.25, sir. 8.25. 8.25 inches. 3 by 8 inch is the diameter of the stirrup that must have to be placed inside every beam. Okay, sir. Okay, sir. On both one side, and because it is in U shape. ठीक है, 3/8 दोनों साइड से माइनस करेंगे ना, क्यों उसके अंदर आपने डालना है, उसके अंदर अंदर यानी इधर आपने बार शुरू करना है, इधर बार शुरू करना है. ठीक है सर, ठीक है. ठीक है. अच्छा, अब देखें, आप नंबर 4 ट्राई करें. नंबर 4 बार, नंबर 4 बार का अपना डायमीटर तो 1/2 इंच है. ठीक है ना. तो आपको ये भी पता है कि बिटवीन द 2 बार्स यू हैव टू प्रोवाइड सम स्पेस, और एसीआई कोड के मुताबिक तो वो स्पेस आपको 1 इंच भी काफ़ी है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आप ये स्पेस हमेशा 1.5 इंच रखें, इससे कम ना रखें. ज़्यादा हो तो अच्छा है, ज़्यादा खैर, कम ना रखें. उसकी वजह यह है कि वो कोड है अमेरिकन, और अमेरिकन कोड ने 1 इंच इसलिए दिया है कि अच्छा वाइब्रेटर होगा, आपके पास कंपैक्टिंग टूल्स होंगे, फिर कंक्रीट फ्लो करेगा वाइब्रेटर से. अगर कंक्रीट ड्राई हो, relatively speaking, if concrete is dry and you don't have any compacting tools like vibrators, so concrete will be stuck here. Concrete is stuck कर जाएगा और ये नीचे नहीं आएगा अगर आपके बार्स के दरमियान फासला स्पेसिंग बहुत कम हो. But if you have at least 1.5 inch spacing, then concrete can come down and can fill the spaces between the bars and can make a bond with steel bars, which is very, very important. ये बात आप याद रखें कि अगर आपको 8 बार्स की जरूरत है, या इस केस में 10 बार्स की, नंबर 1/2 इंच के, और आप 10 की बजाय 8 बार्स डाल दें तो आपका बीम फेल नहीं हो, क्योंकि उसमें फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन अगर आप 10 की बजाय 20 बार्स भी डाल दें और कंक्रीट बार्स के दरमियान अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर गया और बांड अच्छा नहीं बना, तो बीम आपका फेल हो जाएगा. तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंक्रीट फ्लो करे अराउंड ईच एंड एवरी बार और अच्छा बांड बन जाए. उसके लिए स्पेसिंग बिटवीन द स्टील बार्स इज ए मस्ट रिक्वायरमेंट. तो ये मैं आपको कहता हूँ कि कम से कम अच्छा, अब अगर आप 1.5 इंच रखते हैं और आप 5 बार्स देख लें कि 5 बार में कितने स्पेसेस आ जाएंगे, स्पेसेस बिटवीन द बार्स.
4 सर। हाँ, 4 में 3 आएंगे और उसमें 4 आएंगे, तो 4 इंटू 1.5 इंच कितना हो जाएगा? 6 इंच। यस सर। अच्छा, अब बार का अपना डायमीटर जो है वो 1/2 इंच है। अगर आप 5 बार डालें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना हो जाएगा? सर ये टोटल 8.5 बनता है। 8 और 8.5। तो 8.5 का मतलब ये है कि 5 बार आप इसमें नहीं डाल सकते अगर आप 1.5 इंच की स्पेसिंग रखते हैं दरमियान में, ठीक है ना? यस सर। 4 डालेंगे, लेकिन कोड अगर आप कोड देखें और कोड में जो टेबल बना है उसके मुताबिक देखें तो फिर आप 5 बार डाल सकते हैं, क्योंकि वो 1 इंच की स्पेसिंग करता है। लेकिन चूंकि हमें अपने इधर पाकिस्तान के हालात का पता है कि अब कोड आपको ये नहीं कहता कि आप जरूर 1 इंच डालें, वो कहते हैं 1 इंच कम से कम है, आप उससे ज्यादा डालें तो अच्छा है, ठीक है ना? अगर उससे 1 इंच से ज्यादा डालेंगे तो अच्छी बात है, यानी कि अगर आपके 5 बार आप प्लेस कर सकते हो आप, और आप उसके 4 प्लेस करें तो ये अच्छी बात है, यानी कंक्रीटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। कोड में 2 किस्म की रिकमेंडेशंस हैं या प्रोविजंस हैं। वन सेट ऑफ रिकमेंडेशंस एड्रेसेस द सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी इशू, उस पर आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, यानी कि इतनी मिनिमम एरिया ऑफ स्टील है, इतना मिनिमम डेप्थ है वगैरह वगैरह, उससे किसी भी सूरत आप कम नहीं जा सकते। लेकिन बाकी चीजें ऐसी हैं कि कोड वो रिकमेंडेशन इसलिए देता है कि आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो हैं उसको आप अच्छी तरह से कर लें। मसलन 1 इंच है, 1 इंच कहता है कोड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो 1 इंच से आप कम तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं 2 इंच करता हूं ताकि मेरा कंक्रीट अच्छी तरह फ्लो करे, तो कोड अप्रिशिएट्स दिस, कोड उसको डिस्करेज नहीं, को कहते अच्छी बात है आप करें। तो मतलब 5 बार की बजाय अगर आप 4 बार डालें तो अच्छी बात है। अब हमारे पास टोटल बार हैं 10, अगर 4 हम एक में डालेंगे, 4 हम दूसरे में डालेंगे, तो 2 हमें फिर उसके ऊपर डालने पड़ेंगे ऐसे। What will be the disadvantage of so many bars? What will be the disadvantage? Anyone? सर हमारे पास जो जिस स्ट्रक्चर के लिए हम ये डिजाइनिंग करें तो वो एक्सपेंसिव होता जाएगा। नहीं, एक्सपेंसिव तो बिल्कुल नहीं होगा। उस वजह ये है, प्लीज एक मिनट सब्र करें, मैं इसका जवाब दे दूं ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि एक्सपेंसिव ही नहीं होगा। एक्सपेंसिव इसलिए नहीं होगा कि आप टोटल एरिया ऑफ स्टील जो आपका है ना, टोटल एरिया ऑफ स्टील वो तो है 1.95, तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंच हो जाएगा। तो वेट तो इससे निकलेगा ना, 2 स्क्वायर इंच से वेट निकलेगा, डायमीटर ऑफ द बार से तो वेट नहीं निकलेगा। अगर आप 10 बार नंबर 4 के इस्तेमाल करें और नंबर 6 के आप 5 बार इस्तेमाल करें, तो नंबर 6 के 5 बार उससे महंगे आपको पड़ेंगे, क्योंकि टोटल एरिया उसका बढ़ जाता है, वो 2.2 स्क्वायर इंच होगा, ये 2 स्क्वायर इंच है। वेट तो एरिया से इससे निकलेगा ना, डायमीटर ऑफ द बार पे तो डिपेंड नहीं करेगा। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि नहीं, वेट प्रोजेक्ट अनइकोनॉमिकल तो नहीं होगा। ओके ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अनइकोनॉमिकल नहीं होगा। यस क्योंकि सर, हम तो वेट से परचेस करेंगे ना, तो वेट से जब परचेस करेंगे तो 10 बार आपके नंबर 4 के हो और 5 बार आपके नंबर 6 के हो, तो वेट में बराबर होंगे या उससे हो सकता है कि थोड़ा वेट उसका नंबर 6 का ज्यादा हो। जी सर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस तो ज्यादा हो जाएंगे और साथ मैकेनिकल वर्क भी, तो लेबर का ज्यादा लगेगा ना सर इस पे 10 बार। ट्रांसपोर्टेशन किस तरह ज्यादा होगा सर? अगर हम नंबर 8 बार ले लें, वो 3 बार से हमें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, और ये 10 बार वेट रिमेन द सेम। ट्रांसपोर्टेशन इज चार्ज्ड अगेंस्ट द वेट। ट्रांसपोर्टेशन इज चार्ज अगेंस्ट द वेट। आप कितना टन सरिया लेके जाएंगे उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप नंबर 4 ले जाएंगे तो नंबर 4 से उनकी ज्यादा रेट होगा और नंबर 6 का रेट कम होगा, ये नहीं है इस तरह से, वो वेट पे होगा। सर लेबर भी तो ज्यादा लगेगा। वन बाय वन प्लीज, 1 by 1। जी सर लेबर भी तो ज्यादा लगेगा ना, मतलब स्टिरअप्स के साथ इसको वायर से कनेक्टेड करते हुए। स्टेप ये बात आपकी पार्शियली ठीक है, लेकिन नंबर 4 बार को संभालना आसान है, नंबर 6 बार जो है जरा हेवी होता है, तो लेबर उसको जरा तकलीफ से उठाएगा। नंबर 4 बार ये सस्ता, उसका वेट कम है और उसकी हैंडलिंग जरा आसान होगी, तो उसमें वो चीज भी मेरे ख्याल में कंपनसेट हो जाएगी। व्हाट एल्स?
सर स्ट्रक्चर का वेट ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो सकती है। वेट क्यों ज़्यादा होगा? वेट तो मैंने बता दिया, वेट रिमेन्स द सेम। 10 नंबर 4 सदियों का वेट और 3 या 5 नंबर 6 का वेट, ये तो बराबर होगा, तो स्ट्रक्चर का वेट क्यों बढ़ेगा? सही है सर। सर इफेक्टिव डेप्थ विल डिक्रीज। जब आपके लेयर्स जो हैं ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आपका इफेक्टिव डेप्थ कम होता जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ सेंट्राइड ऑफ द रिइंफोर्समेंट है। अब आपके जो 3 लेयर्स हैं इसका सेंट्राइड जो है ये तकरीबन कोई इधर इसके करीब आएगा, इधर ये काफी ऊपर चला जाएगा, तो आपका इफेक्टिव डेप्थ बहुत कम हो जाएगा और हो सकता है कि आपका फाइनली FIMN जो है वो MU से कम आ जाए। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि आप के जितने लेयर ज्यादा आएंगे तो कंक्रीटिंग उसमें उतनी अच्छी नहीं होगी। एक लेयर हो तो कंक्रीटिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन 2-3 लेयर्स होंगी तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट का कोई टुकड़ा उसके दरमियान फंस जाएगा या कुछ हो जाएगा, जिससे आपकी कंक्रीटिंग अच्छी नहीं होगी। तो ये 2 रीजन हैं बेसिकली, एंड देयर आर एडवांटेजेस आल्सो। इसके एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस का ये है कि जितना कम डायमीटर का बार होगा तो उसमें एक चीज़ है जो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन एट दिस स्टेज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। कम डायमीटर बार जो है उसमें क्रैक कम आएगा, बीम के अंदर क्रैक कम आएंगे, उससे इनिशियल जो आपके माइक्रो क्रैक्स हैं ना वो बहुत कम आ जाएंगे। लेकिन अगर आप बड़ा डायमीटर का सरिया इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्रैक ज़्यादा आ जाएंगे। ये किसी और वक्त में एक्सप्लेन कर लूँगा। बहरहाल आप इसको देख सकते हैं कि 10 बार्स को संभालना एक बीम के अंदर इट विल बी डिफिकल्ट जॉब, सो वी विल ट्राई नंबर 5 और नंबर 6. Number 6 seems to be very convenient because 5 bars will be required, 3 bars can be placed in one layer and 2 on top of that. Okay, you can also try using more than 2 diameter of bars. आप 2 मुख्तलिफ डायमीटर के बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही लेयर में, लेकिन मैंने बता दिया था आपको कि उसका डिफरेंस जो है वो 2 साइज से ज़्यादा न हो। नंबर 8 के साथ नंबर 6, नंबर 6 के साथ नंबर 4 इस्तेमाल कर सकते हैं एक लेयर में, लेकिन उससे ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं कर सकते। बिटवीन द लेयर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम फाइनली डिसाइड करते हैं टू यूज नंबर 4 बार और नंबर 6 बार, सॉरी नंबर 6 बार हम इस तरह प्लेस करते हैं 3+2 में, 3+2। So you can see that the bars are very well placed. Concrete can flow very easily around the bars. तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें प्लेसमेंट जो है हमारी ऐसी हो जाएगी कि उसमें कंक्रीट का बॉन्ड स्टील के साथ अच्छा बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, अब इसकी कैपेसिटी को दोबारा हमने चेक करना है एक्चुअल डी के साथ। अच्छा, एक्चुअल डी इज नॉट ए करेक्ट वर्ड दैट आई यूज्ड। एक्चुअल डी वो होगा जो कि बीम जब आप फील्ड में बनाएंगे ना, उसमें फिर आपको एक्चुअल डी मिलेगा। ये डी है आफ्टर रीइंफोर्समेंट, यानी जो डायमीटर ऑफ द बार में सिलेक्ट करता हूं उसके बाद डी मालूम करने से ये तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल डी हो सकता है ये ना हो। उसकी वजह ये है कि जब हम ये स्टील का केज बनाते हैं ना बीम के लिए, तो वो तो एक फैब्रिकेटर बनाएगा और फिर उसको फार्म वर्क के अंदर रखेगा, तो हो सकता है कि उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी फर्क हो हमारी एक्चुअली इसके जो हम इधर अपने कैलकुलेशन में और डायग्राम्स में शो करते हैं, ड्राइंग में हो सकता है कि फ़र्क। उसकी वजह कि हम कहते हैं कि 1.5 इंच कवर होगा। अब जब उधर उसको पूरा केज जब फार्म वर्क के अंदर रखेगा तो हो सकता है कि 1.5 इंच के बजाय 1.4 इंच का कवर दे दे या थोड़ा सा 1.6 इंच का दे दे, ये पॉसिबल है। तो एक्चुअल डी जो है, एक्चुअल डी इन द फील्ड, एक्चुअल डी ऑफ द बीम मे बी डिफरेंट देन व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। हम एक एज्यूम की बात कर रहे हैं, एज्यूम तो बिल्कुल बिगिनिंग में कुछ पता हमें नहीं है, और फाइनल जब हमने डायमीटर ऑफ द बार को फिक्स कर दिया और बार हमने डाल दी, उसके बाद हम रिकैलकुलेट करेंगे डी को, जिससे हम फाइए में दोबारा मालूम करेंगे। लेकिन स्टिल दिस इज नॉट एक्चुअल। एक्चुअल वी डू नॉट नो। एक्चुअल जो है वो डिपेंड करता है साइड पे, ओके वो उसमें कितना फर्क आ सकता है, लेकिन वो फर्क आ सकता है साइड से भी, साइड में थोड़ा फर्क आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें हम वो एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम एक्चुअल डी मालूम करेंगे। तो इसमें हमने 15.5 इंच लिया था, बिल्कुल उस तरह से जो इस तरह के एग्जांपल में हमने कर दिया। y1 y2 हमें मालूम है, एक्चुअल y बार कम्स आउट टू बी 3.15 इंच।
क्योंकि ये बिल्कुल वही इस एग्जाम्पल की तरह है, 3+2 बार्स हैं और y1 y2 मालूम करके के बाद y बार हमें पास आ गया। अब हमारे पास एक्चुअल जो d आ गया वो 18 माइनस 3.15 होगा, 14.85, which is less than what we assume, 15.5 इंच। जब ये उससे कम है, जब हमारे पास d, अब जब हमारे पास रिकैलकुलेटेड d है आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ बार इज लेस देन 15.5, तो हमारे पास ऑब्वियसली 5 mn जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अब हम as को भी देखेंगे कि हमने as जो है कैलकुलेटेड के मुकाबले में as कितना लिया हुआ है। हमारे पास जो as कैलकुलेटेड रिक्वायरमेंट से आ रहा था 1.95 आ रहा था, और हमने जो as प्रोवाइडेड है, हमने कितना as प्रोवाइड किया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.44 जो कि 2.2 स्क्वायर इंच है। तो हमारा as प्रोवाइडेड इज मोर देन as रिक्वायर्ड, बट our d प्रोवाइडेड इज लेस देन assumed d। तो हम दोबारा आप कैपेसिटी मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? अब हम स्मॉल a मालूम करेंगे, लेकिन स्मॉल a हम एक्चुअल जो as हमारा पास फाइनल as है ना, इससे हम मालूम करेंगे स्मॉल a। स्मॉल a विल बी नाउ इक्वल टू, एग्जैक्टली आप मालूम कर सकते 2.2 into 40 ASFY divided by 0.85, 3 and 12। एक्चुअल जो अब आपके पास आई मीन एक्चुअल से मेरा मतलब जो रिकैलकुलेटेड as से आप निकालने के बाद, तो ये आप देखें as हमारा 2.2 स्क्वायर इंच है, स्मॉल a आप इससे निकालें तो स्मॉल a हमारा आ गया 2.87 इंच। ठीक है, अब विद दिस स्मॉल a 2.87 इंच, with this d of 14.85 inch, and with this as of 2.24 square inch, you can now calculate 5 mn again like this. 5 mn is 0.9. This is as that we have provided. This is d, which comes out to be 14.85 inch now, and small a that we have recalculated from this as. 5 mn comes out to be 106.25 inch, which is still greater than 1002 inch cape. So we should be happy with this, because 5 mn is greater than this, and we can recommend finally using 5 number 6 bars, and b equal to 12 inch, h is equal to 18 inch, and this concludes our design. This concludes our design. The next step is the drafting. Drafting is done in this manner. You can see a 3-dimensional view of the beam. Although in our office drafting we do not provide 3D details, we only provide 2-dimensional details, but this is just to show you a clear picture of this beam reinforcement. A 3D view has been shown to you. These 3+2 bars have been placed. There is a spacer bar also shown here. This spacer bar will be required to provide support to the bars in the second layer, because in the first layer the support is the stirrup, but for the second layer the reinforcement, for the placement of reinforcement you need a support. So this is provided in this manner. If I show you a close view of this, you can see these small bars. These are called spacer bars, in order to provide a space between first and second layer, and the minimum requirement is 1.5 inch. I will show you a video of this small animation, you can see, and then we can discuss, and that will be the end of this lecture. You can see the spacer bars. These are small pieces of bars which are placed at some interval to support these bars in second layer and also in third layer if needed.
Okay, so what you see is that these are 5 bars, but 3 bars have been carried to the support continuously, and 2 bars in the second layer have been curtailed at this location. You can see this location. I hope you can see this. And the reason is that we have calculated area of steel based on the maximum bending moment. 1002 value was here. But the value of bending moment at this location is substantially less than the maximum bending moment. So the area of steel which is required at the center may not be required in this location. So we can curtail few bars for economy. To economize the project, we can curtail few bars which need not to be taken to a support. Okay? Okay, sir. How this should be done, there are some code provisions for this, which we will discuss some other time, but you should keep in mind that all these 5 bars need not to be carried to a support. Some of the bars can be curtailed for the reason that I explained earlier. Okay, if there are any questions, you can ask your questions. Otherwise, this lecture is over now. Sir, please, one by one, you tell me your name and then you can ask questions. Sir, my name is Fawad Iqbal, sir. Okay, please. स्टिरअप और बार्स के दरमियान में स्पेस छोड़ना जरूरी नहीं है सर? स्टिरअप और बार के दरमियान कितने स्पेस जरूरी है? सर ये ड्राफ्टिंग में आपने जो दिखाया सर, तो उसमें ये बार और स्टिरअप के दरमियान गैप नहीं था, 2 बार्स के दरमियान स्पेस है, लेकिन ये बार और स्टिरअप के दरमियान फिर ये स्पेस नहीं है सर, तो क्या ये जरूरी नहीं है? तो हर जगह पर नहीं है ना, स्टिरअप तो आप मुख्तलिफ डिस्टेंस पे है, तो कंक्रीट उसके दरमियान फ्लो कर जाएगा ना, आप इसको देख लें, इसके दरमियान तो काफी स्पेस है, तो कंक्रीट कैन फ्लो वेरी वेल अराउंड दिस, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज। सर माय नेम इज सर मोहम्मद सर, जो सिर्फ जो है इनको जो एंड पॉइंट्स है इनको डायगोनल की शेप में बेंड किया हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिस में यहाँ पर करते तो जी साइड्स पर ही चढ़ा देते हैं सर, इसमें एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा सर? हाँ, इसका है, देखिए इसका ये एडवांटेज है ना, ये जो हमने, आप इसकी बात कर रहे हैं, हुक की बात कर रहे हैं? यस सर, इसी की बात कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहे हैं ना आप, और वो स्ट्रेट होता है ना, इस तरह जो आम लोग करते हैं। यस सर। ये इसका एडवांटेज ये है कि देखिए जब व्हेन इट ओपन्स अप, जब ये खुलेगा ना, बीम पे जब लोड आएगा और ये खुलने की कोशिश करेगा, तो ये दिस विल एक्ट लाइक अ नॉट, और ये नॉट जो कंक्रीट के अंदर है ना, ये फंस चुका है और इसका कंक्रीट का बांड है, तो इसका ओपनिंग अप विल बी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री। तो ये जरूरी है, ये चाहिए, अगर देंगे तो अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। सर माय नेम इज विसाम सर, ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कोड में कोई स्पैन पे रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, जितना बड़ा हो जो एल पे जितना बड़ा हो सकता है तो होगा? क्या चीज दोबारा पूछिए सर? स्पेन पे भी कोड ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि एल 20 फीट से या इतना? नहीं, कोई लिमिट नहीं है, इस किस्म की नहीं है, वो तो डिजाइनर के ऊपर है। कोड इस किस्म की बातें नहीं करता कि लेंथ इतना होगा, वो डिजाइनर, जब आप देखेंगे ना कि ये चीज अब अनइकोनॉमिकल हो गई, वेट बहुत ज्यादा हो गया, तो आप किसी दूसरे मटेरियल की तरफ जाएंगे। इट इज द चॉइस ऑफ द डिजाइनर, ठीक है ना। और फिर इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ बीम नहीं। अभी मैंने एक डिजाइन किया हुआ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, दिस इज ए 110 बाय 110 फीट हॉल, बड़ा हॉल है, लेक्चर थिएटर है। उसमें जो हमने डिजाइन सिस्टम प्रोवाइड किया है उसको फोल्डेड प्लेट कहते हैं, फोल्डेड प्लेट। अगर उसी फोल्डेड प्लेट की बजाय आप बीम्स में इसको करेंगे ना, तो इट विल बी वेरी वेरी हाईली अनइकोनॉमिकल, बहुत अनइकोनॉमिकल। बीम की डेप्थ आपको तकरीबन 8-9 फुट की बीम की डेप्थ चाहिए, 8-9 फुट। यू इमेजिन 8-9 फुट कमरे की पूरी हाइट होती है, तो इतना डीप बीम जब उसमें प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो तो स्पेस ही उसके फिल हो जाएगा, फिर फायदा क्या होगा उसका, ठीक है ना। तो उसमें फिर मुख्तलिफ किस्म ऑप्शन हमारे पास होते हैं, मुख्तलिफ मटीरियल के भी होते हैं और डिजाइन सिस्टम के भी। दिस इज योर फर्स्ट, ये तो पहला बीम है ना आप कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और चीजें आप पढ़ते जाएंगे। एनीथिंग एल्स? सर मेरा नाम है मलखान है सर। ये ग्रेड 40 सर जब हम करते हैं ना प्रोवाइड ग्रेड 60 के बजाय सर, तो फैक्टर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सर ये जो डेप्थ है सर ये डिक्रीज होता है, ये क्यों सर?
ये इस वजह से कि जो ये इक्वेशन हमारे हैं ना L/16 और L/18 और ये इक्वेशन जो हैं ये असल में डिपेंड करते हैं, आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ये डिपेंड करेगा ना। असल में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स फ्रॉम BH³/12, ठीक है ना, तो आपकी डिफ्लेक्शन कम होगी। तो ये असल में ये रिलेशनशिप जो डिराइव हुई हैं ये बेस्ड हैं एक टिपिकल रीइंफोर्स कंक्रीट बीम पे जिसमें ग्रेड 60 का सरिया लगा हो और उसकी बेस पूरी कैलकुलेशन सारी हुई है। ये तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है ना, एक्चुअल इक्वेशन तो नहीं है, एक्चुअल इक्वेशन तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन ग्रेड 60 के बेस पे निकाली गई हैं। अगर आप उस सिंप्लीफाइड इक्वेशन को ग्रेड 40 के बेस पे निकालेंगे तो आपको ये डेप्थ थोड़ी सी कम मिल जाएगी, ठीक है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह कि ग्रेड 40 का स्टील जो है थोड़ा ज़्यादा डक्टाइल है और ये नंबर ऑफ बार ज़्यादा होंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट एरिया आएगा वो ज़्यादा जाएगा और मुख्तलिफ रीजन हैं, तो उसकी वजह से ये है, ठीक है। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, ये जिस केस में हमने भी 5 बार जब हमने बार्स 2 लेयर्स में लगाई है तो इफेक्टिव डेप्थ किस तरह कैलकुलेट की है? किस तरह कैलकुलेट की है? यस सर पहले तो हम ये होता था कि एक लेयर में रीइंफोर्समेंट होती तो उसके सेंटर से डिस्टेंस लेते थे, लेकिन अभी 2 लेयर्स में है तो फिर हम कैसे डिस्टेंस लेंगे? वो तो मैंने पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया है ना इसमें। आपको ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड में पूरा डेमोन्स्ट्रेटेड है, इसको आप फिर बाद में देख लें। इसका हम मूवमेंट लेते हैं इन 5 बार्स का अबाउट द बॉटम। तो 5 × 0.44 into y bar, because y bar is not known to us, which is the centroid of all the bars, 5 bars, ठीक है, from bottom। और फिर हम 3 बार्स का 3 × 0.44 और उसके सेंटर से बॉटम तक हम कितना फासला है तो वो इसका मोमेंट आर्म बन जाएगा। और 3 बार्स into y1, फिर 2 बार्स into y2 और 5 बार्स into y bar। इसको 5 into y bar को हम इक्वेट करेंगे 3 into y1 + 2 into y2 के, उससे हम y bar निकालेंगे और उस y bar से फिर हम h, जब h से y bar माइनस करेंगे उससे हमारे पास इफेक्टिव d आ जाएगा, ठीक है। ये सर जो हमारे पास जी प्लीज सर हमारे पास जो बार्स की स्पेसिंग है वो भी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है या नहीं? उनके एंड से हम देखेंगे जो हमने 1.5 इंच स्पेसिंग रखी थी। नहीं, वो क्लियर है, दैट इज क्लियर स्पेसिंग फ्रॉम एज टू एज, नॉट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। ओके सर। इसमें आरसीडी में हम स्पेसिंग बता देंगे साथ कि क्लियर स्पेसिंग होगी तो इसका मतलब ये होगा कि एज टू एज है। सेंटर होगा तो सेंटर ऑफ द बार टू सेंटर ऑफ द बार, ठीक है जी। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर ये जो हम बार्स प्लेस करते हैं, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए हमारे पास जो साइमेट्री है सेकंड लेयर में वो फुलफिल नहीं हो रही हो, तो फिर हम बार के साइज को चेंज करेंगे या हम साइमेट्री पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं? सर नहीं, सिमेट्री पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बार के नंबर ऑफ बार्स आप चेंज करें, डायमीटर चेंज करें, जिसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। डिज़ाइन का ये कोर्स इस तरह नहीं है कि जिस तरह आप एनालिसिस का कोर्स पढ़ते हैं कि आप 5 डिजिट्स तक आगे काम करते हैं। इसमें आपने देख लिया कि 1.95 की बजाय 2.2 स्क्वायर इंच हमने एरिया ऑफ इस्तेमाल कर लिया। तो द स्टूडेंट्स फील डिसकम्फर्ट इन दीज थिंग्स इन द बिगिनिंग। मुझे पता है कि वो कहते हैं कि 1.95 की 2.2, बल्कि मैं तो 2.5 भी इस्तेमाल कर सकता था। 2.5 2.4 डिपेंड करता है कि आपके एसीआई कोड की जितनी प्रोविजन है ना सबको सेटिस्फाई करना जरूरी है। एरिया ऑफ स्किल अगर थोड़ा बढ़ जाए, एज लॉन्ग एज के एज मैक्सिमम से न बढ़े, तो अगर थोड़ा बढ़ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हमने 2 चीज़ों को देखना है, एक लाइफ सेफ्टी को देखना और एक इकोनॉमी को देखना है। लेकिन इकोनॉमी सिर्फ स्टील के थोड़े से एरिया बढ़ाने से आपकी इकोनॉमी कंप्रोमाइज नहीं होगी, बल्कि उसके आप बहुत सारी चीज़ें और भी देखेंगे। मतलब आपके पास फार्म वर्क है, लेबर एफर्ट है, ठीक है ना, कंक्रीट का फ्लो है, इन तमाम प्रैक्टिकल चीज़ों को आप देखेंगे। उसके साथ फिर अगर आप इकोनॉमी ला सकते तो ठीक है, अगर नहीं ला सकते तो फिर खैर है, कोई बात नहीं है। उसमें आप अगर 1.95 को 2.2 डाल दे, 2.3 डाल दे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आप एक तो इसमें ये है कि आपके पास हर डायमीटर का बार अवेलेबल भी नहीं है। नंबर 4 के बाद आपके पास नंबर 5 का बार है, 4.5 का कोई बार नहीं है, तो आपके पास चॉइसेस भी लिमिटेड हैं। फिर ये है कि अवेलेबिलिटी भी हर वक्त इस तरह नहीं होती कि नंबर 4 के बाद आप पूरे नंबर 5 इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो अभी हम एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द एजुकेशन फैसिलिटीज इन केपी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 5-6 साल हमारे लगे, इस प्रोजेक्ट में भी कंप्लीट हो गया।
तो उसमें मुख्तलिफ जगहों पर हमारे स्कूल बनेंगे, उसके लिए उनके लिए हमने स्टैंडर्ड डिज़ाइन तैयार किया हुआ है। उसमें भी हमने यही कोशिश की है कि जिधर भी स्कूल बने तो वो चीज़ें जो हों वो अवेलेबल हो उस जगह पर। अगर हमें थोड़ा सा इन्फोर्समेंट ज़्यादा भी करना पड़े तो हम कर सकते हैं। डिज़ाइनर्स के पास ये चॉइस है कि जब तक कोड की जो प्रोविजंस हैं वो वायलेट ना हो तो विद इन द कोड प्रोविजंस वो अपनी चॉइस को आगे पीछे कर सकता है। ठीक है जी सर, फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरे लेयर में हमारे पास 3 बार आ रहे हैं, तो हमारे साइमेट्री के लिए हम 4 बार लगा सकते हैं, उसका एरिया थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वी डू दिस, हम करते हैं इस तरह से। ओके। क्योंकि अगर आप एक बार दरमियान में रखेंगे तो वो ज्यादा खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि कंक्रीट जो है ऊपर से जब आएगा तो 2 बार्स के जो नीचे 2 बार देना उसके दरमियान कंक्रीट कैसे आएगा जब आपने उसके ऊपर बार रख दिया, वो तो उसके नीचे नहीं आ सकता है। ठीक है ना, तो ये ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत कि अगर आपने एक बार बढ़ा दिया तो मतलब हम तो लाइफ सेफ्टी पहले होगी ना इकोनॉमी से, तो उसमें कंक्रीट का स्टील के साथ बांड ठीक नहीं बनेगा। अगर आप 2 बार के ऊपर एक बार डाल देते हैं तो कंक्रीट उधर किसी नीचे आएगा, नीचे नहीं आ सकेगा फिर। सर ये सर हजरत बिलाल नाम है मेरा सर। ये हम जो सर हजरत बिलाल मेरा नाम है सर। सर ये जो हम नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करते हैं ना सर, तो ये हम बीम के उस पोर्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं जो टेंशन में है या ओवरऑल बीम के लिए? नहीं, सिर्फ टेंशन पोर्शन के लिए, ओनली फॉर टेंशन। ठीक है सर। सर और ये कंप्रेशन पोर्शन इसमें कैसे लगाएंगे इसका? कंप्रेशन में बार जब लगाते हैं आमतौर पे तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, इसमें तो ऊपर कोई टेंशन सपोर्ट के ऊपर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस बीम में सपोर्ट के ऊपर आपके पास टेंशन आ जाएगी, तो आप सपोर्ट के ऊपर जो बार डालेंगे वो आप ऊपर डालेंगे, नीचे नहीं डालेंगे, क्योंकि नीचे आपको जरूरत नहीं है सपोर्ट। नेगेटिव और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप एक कंटिन्यूस बीम हो तो उसमें जो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा उसके लिए हम नीचे सर्किट डालेंगे और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए आप ऊपर डालेंगे। तो सपोर्ट के ऊपर जो रिइंफोर्समेंट होगी ऊपर, वो तो हम बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट से मालूम कर लेंगे और उधर आप डाल देंगे ना। लेकिन बाकी जगहों पर जो रिइंफोर्समेंट है वो हम सिर्फ इसलिए कम से कम 2 बार ऊपर प्रोवाइड करते हैं ताकि बीम का केज, जो केज ऑफ द बीम ये बनाएं और इसको कन्वीनियंटली हम फॉर्म वर्क के अंदर प्लेस करें। और आल्सो टू होल्ड द स्ट्रिप्स, जो स्ट्रिप को होल्ड के लिए भी आप कम से कम 2 बार चाहिए। वो हम ऐसे भी नंबर 4 नंबर 5 बार हम खुद अपनी मर्जी से उसमें लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े डायमीटर का बार ना हो। नंबर 4 नंबर 6 5 बार हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर नेगेटिव बेंडिंग के लिए हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो फिर उसका भी हमें ख्याल करना पड़ेगा कि अगर हमें नंबर 6 बार उधर नेगेटिव बेंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम कोशिश ये करेंगे कि ये 2 बार जो हैं जी भी नंबर 6 की हो। इस केस में जो हमने ऊपर नंबर 6 किए हैं ये बस ऐसे ही हमने किए हैं, नंबर 4 भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऊपर वाले बार नंबर 4 भी करें तो यू कैन डू दिस, क्योंकि ऊपर हमें बार जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ स्ट्रिप्स को होल्ड करने के लिए और बीम की शक्ल बनाने के लिए, बीम का पूरा शेप बन जाए, कम से कम आपको 2 बार ऊपर चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर अमल सर, जब डिज़ाइन सर हो जाता है सर एक बिल्डिंग और वो बन जाता है तो सर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कब होती है उसके फेलियर की? ये आपने ऐसा सवाल कर दिया कि तो उसमें तो फेलियर ऑफ द होल स्ट्रक्चर यू आर क्वेश्चनिंग, नॉट ऑफ ए बीम। उसमें तो कॉलम्स भी हैं, फिर स्लैब्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम इस वक्त सिर्फ बीम की बात कर रहे हैं कि फेलियर ऑफ द बीम जो है ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके अंदर है, बिल्ट इन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो 1 in 10,000 है, यानी 10,000 बीम में से एक बीम फेल होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि 10,000 बीम आप डिज़ाइन करेंगे तो उसमें ज़रूर एक हो सकता है 1 लाख बीम भी बनाए उसमें भी एक फेल ना हो। और वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इस तरह निकली हुई है कि हमने इसमें ये एजम्पशन की है ना कि हमारा स्टील का सरिया जो है वो ग्रेड 40 होगा तो उसका FY हमेशा 40 आएगा 60 का। तो ये पॉसिबल है कि 10,000 केसों में किसी एक जगह पर स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ जो है 60 के बजाय 58 हो या 52 हो या 53 हो, ये हो सकता है। इस तरह कंक्रीट की स्ट्रेंथ FC प्राइम की 3,000 की बजाय 2,000 हो। और लोड जो हमने एज्यूम किया हो सकता है कि एक्चुअल लोड भी उससे ज़्यादा हो, और ये सारी चीज़ें एक ही सिचुएशन में, एक ही बीम के अंदर हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हमने जो लोड एज्यूम किया हो प्रैक्टिकली लोड भी उससे बहुत ज़्यादा आ जाए, और बदकिस्मती से
स्टील की स्ट्रेंथ भी उसी बीम के अंदर कम हो, कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी कम हो, इफेक्टिव डी भी फैब्रिकेटर ने कम किया हो, तो ये सारी चीजें जब एक बीम में कम्युलेट हो जाएंगी तो फिर पॉसिबिलिटी का चांस है फेलियर का। अदरवाइज ये प्रॉपरली डिजाइन बीम, आपने प्रॉपरली डिजाइन बीम किया तो वो ऐसे फेल नहीं होगा। सर अगर वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं है सर, और उसके बाद सर अगर हम वो मतलब स्ट्रक्चर बना लेते तो उसकी जो चांसेस है कि कब मतलब हमें कब पता चलेगा कि ये फेल हो गया सर? अगर प्रॉपरली डिजाइन बीम नहीं तो अगर आप उसकी देखना चाहते हैं ना, मतलब उसका कोई सिंगल स्टेटमेंट एज स्वीपिंग स्टेटमेंट तो मैं आपको नहीं दे सकता। हम जब इस किस्म के स्ट्रक्चर का भी हमारे पास आ जाते हैं, बाज वक्त एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको आप चेक करें कि ये स्ट्रक्चर जो है ये कहीं अंडर डिजाइन तो नहीं है, यानी जो लोड उसके ऊपर आएंगे उस लोड के अगेंस्ट इसकी जो कैपेसिटी है वो कम तो नहीं है, आप इसको चेक करें। ठीक है ना, इस किस्म के केस हमारे पास आते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि प्रोवाइडेड रीइंफोर्समेंट एंड प्रोवाइडेड साइजेस एंड रिक्वायर्ड साइज एंड रिक्वायर्ड रीइंफोर्समेंट, उसको कंपेयर करते हैं। अगर प्रोवाइडेड साइज और रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड से कम हो तो फिर हम कहते हैं इसकी कैपेसिटी कम है। फिर हम कैपेसिटी कितनी कम है, फिर उसका एक तरीकेकार है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के लिए कि इसकी कैपेसिटी इतनी कम है। कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे, फिर उसमें एडिशनल रीइंफोर्समेंट साइज बढ़ाना, जिसको हम रिट्रोफिटिंग या स्ट्रेंथनिंग कहते हैं, फिर उस पर हम जाते हैं। ठीक है सर, ये जो हमारे कोर्स में ये कंटिन्यूस बीम का रीइंफोर्समेंट का टॉपिक्स है कि नहीं है सर? कंटिन्यूस बीम का है। ठीक है सर, कंटिन्यूस बीम का है। ठीक है, okay, if you still have questions or if you come across questions while solving these problems, you can come up with questions next time. I appreciate asking questions. तो ये हमारा लेक्चर तो खत्म हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये एक क्लास एक्टिविटी है विच यू कैन कंप्लीट लेटर। आप बाद में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अभी जरूरी नहीं है, अभी हम क्लास खत्म करते हैं, लेकिन आप इसको जरा स्टेटमेंट को देख लें। This design problem is more or less similar to the one that we have discussed right now. The only difference is the length of the beam is 30 feet instead of 20 feet, and the service dead load is 1.1 kip per foot, and uniform service lie load is 1.1 kip per foot. So these dead loads and lie loads have to be multiplied by 1.2 and 0.6 respectively, and the beam weight shall also be added to the dead load of the beam, and you can follow the steps of this example and complete this class activity at your homes, and then you can come up with questions. I would like to discuss this beam if you have done this in the next week. Okay, there is another announcement for all of you, please. Before we finally close this session, there is an announcement for you that I will take an extra class because in the next week I may not be able to deliver my lecture. So there will be an extra class that I have arranged for you on Saturday at 11 a.m. for both the sections. So you should come combinedly on Saturday at 11 a.m. to cover the lecture of the next week, which I will not be able to deliver. Okay? सर ओके सर, मेरे इंटरनेट मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सका सर, क्वेश्चन था मेरा था। अच्छा, क्वेश्चन करें ना प्लीज। मैं वसीम नाम है सर। अच्छा, तो मेरी अनाउंसमेंट आप सबने सुन ली? सर वो प्रॉपर नहीं सुनी है सर, और उसे पूछ लूंगा सर। खैर है सर। नहीं, अनाउंसमेंट आपने सुन ली? 11 AM हमने सुन ली। यस सर, यस सर, 11 AM। ओके ओके, प्लीज आप क्वेश्चन करें आप। यस सर। सर ये प्रॉब्लम है सर, जो एग्जांपल 2.2 है सर, जी जी, या 2.1 था सर, इसमें हमने सर जो विड्थ ली है सर, हम मिनिमम सर 12 इंच का कह दिया सर, लेकिन सर अगर हम 18 इंच की जगह 24 इंच ले ले सर, तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड है सर जो हमें बता सके कि विड्थ टू डेप्थ विड्थ रेशो हमने इस तरह इतना लेनी है सर? हाँ है, बिल्कुल है। उसमें ये है कि आप जब आप डेप्थ बढ़ाएंगे ना, तो डेप्थ जाहिर है आप उस वक्त बढ़ाएंगे जब आपके पास एक लॉन्ग बीम होगा या इस पे वेट ज्यादा होगा, तो उसके लिए आपको ज्यादा डीप बीम की जरूरत होगी। फिर ऑब्वियसली जब बीम की डेप्थ बढ़ेगी तो आपको रिइंफोर्समेंट भी उसमें ज्यादा डालनी पड़ेगी। तो फिर उस हिसाब से फिर हम वेट कहते हैं कि अगर 24 इंच है तो लेट से 12 इंच में ये इसके सर ये तो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि मैं कहता हूं कि 24 इंच का बीम है
इसमें रिइंफोर्सिंग बार इतने ज्यादा आ जाएंगे कि 12 इंच पे मुझे मसला होगा बाहर में बाद में, तो मैं शुरू से 15 इंच लेता हूँ। ठीक है, इसका रेशो जो है वो 2 के करीब करीब होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी न हो। मसलन अगर आपके पास एक बीम में 36 इंच का, तो 12 और 36 का जो रेशो बन जाएगा वो 1:3 होगा। तो 1:3 इज नॉट ए गुड रेशो। 1:2 या उससे थोड़ा कम कम हो तो इतना अच्छा है रेशो, क्योंकि उसमें फिर आपके 36 इंच के डी बीम के साथ 12 इंच जब लगेगा तो वो कुछ इतना कन्वीनियंट भी नहीं होगा, उसको और भी इश्यूज होंगे। ये आप सिर्फ फिलहाल याद रखें। लेकिन विड्थ को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया सिर्फ ये है प्लेसमेंट ऑफ द बार का, बाकी कुछ भी नहीं है। कि प्लेसमेंट आप बार को अच्छी तरह से उसमें प्लेस करें, आराम से उसमें जो स्टील बार्स हों वो आ जाएं और आपको कंक्रीट में कोई मसला ना हो कंक्रीट पोरिंग में। अगर आप वेट को अननेसेसरीली बढ़ाएंगे तो द वेट ऑफ द बीम विल अननेसेसरीली इंक्रीज। तो वेट बढ़ाने से फिर आपका बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ेगा, ये भी आपको याद रखना चाहिए। यस सर, ठीक है। अगर आप डेप्थ बढ़ाएंगे तो डेप्थ का तो बड़ा फायदा है ना, आपके एरिया फील कम हो जाएगा। लेकिन वेट बढ़ाएंगे तो एरिया फील पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो है वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम अननेसेसरीली वेट नहीं बढ़ाते जब तक बहुत जरूरत ना हो। Currently in my design office, the most usual beam that we are using in our design is, the most common beam that we are using in our design is 15 by 21 and 15 by 24 inch. ये बहुत कॉमन है जो इस वक्त हम अपने हाई राइज स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल करते हैं। मैंने लास्ट टाइम को कहा था कि there are several high rise structures which we are designing these days, some of which are under construction, some of which are to be launched in नियर फ्यूचर। ठीक है ना, तो वो हम तकरीबन जो जितने बीम्स हम इस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं वो तकरीबन 15, 21, 15, 24 का बीम होता है। जी सर। एनीथिंग एल्स? Okay, if there are no more questions, then this is the end of the lecture. Thank you very much. Khuda Hafiz. Next time, inshallah, Saturday 11 a.m. Inshallah, we'll meet again. Day after tomorrow. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Thank you, sir.